अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है मेरी चैनल सज्जाद रिएक्टर्स में। मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपना या किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का, आप परेशान हैं कहां पे हम एडमिशन कराएं उसके, या उसके करियर के बारे में आप परेशान हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं। अवंतीपुरा में विटी काउंसलर खुला है जिसके सीईओ मिस्टर यासिर जो है खुद एक बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं। बेहतरीन कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये एम टेक, बी टेक, एम कॉम, बी कॉम, BBA, MBA और भी बहुत सारे कोर्सेज, डिग्री जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, बेहतरीन कॉलेजेस में आपका एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दे रहा हूं, आप इनसे बात कर सकते हैं अपने बेहतरीन करियर के लिए, एक अच्छे से मुस्तकबिल के लिए। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, हम सब जो है आजकल न्यूज़ में या कहीं पे भी सुनते हैं कि आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो खतरनाक वॉर हो रहा है, जंग हो रहा है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं, बेसिक थिंग्स लेके आया हूँ। एक्चुअली रशिया यूक्रेन से क्या चाहता है, क्यों जंग हो रही है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड, जो यूक्रेन है उनका क्या कहना है इस पे, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है इस पे। थर्ड, जो वर्ल्ड के लीडर्स है उनका क्या बयान है अब इस जंग पे, जो जंग शुरू हुई है इस पे क्या वो कहते हैं। उसके बाद कुछ और क्लिप्स लाया हूं मैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड इसके करंट अफेयर्स, करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं, ये लेके आया हूं। फर्स्ट हम देखेंगे कि रशिया क्या चाहता है यूक्रेन से। तो इस वीडियो क्लिप को मैं प्ले करने जा रहा हूं। लेट्स नो व्हाट एग्जैक्टली रशिया वांट इन यूक्रेन। I think Putin wants two things in Ukraine. The first thing is to be able to have a say in Ukraine's future and in Ukraine's geopolitical direction. Okay. This is a topic that he writes about very often, and his view is that Ukraine and Russia are brotherly nations, that Ukrainians and Russians are very similar or almost alike. It is that they really should be united as a whole. The second thing that he really wants in Ukraine is to keep NATO, the Western military alliance, out of Ukraine and away from Russia's borders. Other countries that border with Russia are already in NATO. These are countries that used to be in the Soviet Union, but the idea of it entering Ukraine is somehow different. It's seen almost as a kind of red line here. And that has a sort of bunch of different origins. One is that there is a security issue. Ukraine has a long border with Russia, but there's also a kind of shared cultural history. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. So the two major goals for Vladimir Putin is one, to kind of keep Ukraine close to Russia. And number two is to keep Ukraine away from the West. Okay. There are a couple of reasons, but I think the clearest one is just that Vladimir Putin looks at the situation in East Ukraine. He realizes that he's not making any progress in the status quo, and he's in fact worried that things are getting worse. What we see is a simmering but frozen conflict, and at the same time we see Ukraine growing increasingly closer to Western states. We see more military support for Ukraine, more general support for Ukraine. Ця підтримка, вона говорить не тільки про наші стратегічні плани щодо вступу України в Альянс, а що найголовніше, мені здається, щодо рівня нашої армії, забезпеченості нашої армії. This kind of change over the last 8 years where Ukraine has really charted an independent course, a pro-Western course, he views it as a major problem for Russia and something that he wants to reverse in the near future. There really are a lot of different scenarios in terms of what Russia wants out of this. One is this idea that it's about territory, and this could either involve just the idea of gaining territories where there are Russian speakers in Ukraine. It could be more strategic, looking at something like trying to create what's called a land bridge to Crimea, so
actually having a contiguous kind of piece of land that reaches Crimea. But the second idea is that this is about something broader and about really kind of controlling Ukraine's future. And one issue is that even taking new territory doesn't really give Russia a veto over what happens in Ukraine next. So it is possible that there's a kind of a broader goal in everything that's happening right now. Okay, तो ये था what exactly Russia want from Ukraine और in Ukraine. तो अगला वीडियो हम देखेंगे कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की का स्पीच जो 25 फेब को आया था वो हम सुनेंगे. उसमें उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें कही थी, वो हम इस क्लिप में देखेंगे. लेट्स वॉच दिस क्लिप. Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата, People of Ukraine. наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів, відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості в столиці. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступились. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Я вдячний усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам, як заявляє, але й по цивільним. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Знаю, що вкидають зараз дуже багато різної інформації, дуже багато фейків. Зокрема, і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував нашою державою, і я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян, будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма. Разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. No one.
Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. І я запитую в них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого, не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії, ми не боїмось говорити з Росією, ми не боїмось говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО, але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть. Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, від наших героїв, наших сил безпеки, від усіх наших захисників, від нашого народу, від вашої мудрості і від великої підтримки всіх друзів нашої країни. Слава Україні! तो अगली वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के जो फेमस लीडर हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनका क्या कहना है इस वॉर पे, क्या कहते हैं उनके लीडर इस वॉर पे. लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड नो. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Joe The worst fears have now come true, and all our warnings have proved tragically accurate. Johnson. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse. Ukraine is a country that for decades has enjoyed freedom and democracy and the right to choose its own destiny. We and the world cannot allow that freedom just to be snuffed out. We cannot and will not just look away. L'Italia, l'Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al presidente Putin di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina in modo incondizionato. Con gli alleati della NATO ci stiamo coordinando per potenziare immediatamente le misure di sicurezza sul fianco est dell'alleanza e stiamo rafforzando il nostro già rilevante contributo allo spiegamento militare in tutti i paesi alleati più direttamente esposti. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité. The protection of civilians must be priority number one. International humanitarian and human rights law must be upheld. The decisions of the coming days will shape our world and directly affect the lives of millions upon millions of people. In line with the Charter, it's not too late to save this generation from the scourge of war. We need peace. It is wrong, it is against the Charter, it is unacceptable, but it is not irreversible.
I repeat my appeal from last night to President Putin. Stop the military operation. Bring the troops back to Russia. 乌克兰问题是有着非常复杂的历史背景和经纬，演变到了今天这种局面，是各种因素共同作用的结果。我们注意到，今天俄罗斯国防部也有表态，称其武装力量不会对它城市实施导弹、航空和火炮的袭击。那么，我们中方密切关注当前最新事态的发展。我们希望地区能够保持和平，我们也呼吁各方保持克制，避免局势失控。तो ये वाला क्लिप जो है इसमें हम देखेंगे जो अगर नेटो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो कौन जीत सकता है, रशिया या नेटो, और नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो भी हम देखेंगे इस वाली वीडियो में। लेट्स वॉच दिस वीडियो। NATO has for the first time activated a military response force at frontline nations in Eastern Europe after Russia's attack on Ukraine. Russian President Vladimir Putin declared war on Ukraine with heavy explosions. Things escalated because Russia didn't want Ukraine to become a part of NATO. Well, Russia surely can fight Ukraine, and in a previous video, we had compared the military size of Russia and Ukraine for you. But the question is, can Putin's army fight with NATO's military? There are 30 NATO member countries, including USA, Canada, and United Kingdom. NATO is a collective of nations. Its military derives from each active member. Here's a comparison of Russia and NATO's army. Russia's military stands at around 1.5 million armed force personnel, which is 5 times greater than that of Ukraine, which has 311,000 armed personnel. In front of NATO, the Russian army is dwarfed. Based on NATO estimates for 2021, the US contributes 1.4 million armed personnel. It is 41% of the 3.3 million total armed personnel in the alliance. The remaining 59% came from Canada and other European countries. Turkey is the second largest contributor to NATO. It provides 445,500 armed personnel to the alliance, followed by France with 208,000. The UK contributes about 156,200 armed personnel. Here are the NATO countries: Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom, United States, Greece, Turkey, Germany, Spain, Czech Republic, Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro, and North Macedonia. Can NATO help Ukraine to fight Russia? The core principle of NATO's international military alliance is collective defense. It means if any member state is attacked by a third party, then every member state must step in to defend it. However, Ukraine is not a NATO member, so its forces will not be sent directly into Ukraine to fight Russia. Though defenses have been stepped up at bases in neighboring countries, and all NATO members would immediately be at war with Russia if Putin attacks one NATO nation. तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे $35 मिलियन यूएसए ने यूक्रेन ट्रूप्स को दिए हैं, और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के कुछ चीजें बैन की है, और कुछ बैंक भी जो है शट डाउन करे हैं. तो लेट्स वॉच दिस वीडियो. Tonight, the United States and European allies took aim at Russia with new unprecedented sanctions, punishing the Kremlin for invading Ukraine. Millions more in U.S. military is also on its way. Charlie D'Agata has the latest. With the capital under siege, residents here are bracing for another wave of aerial bombardment. But the Russian ground assault has met with ferocious resistance from Ukrainian forces. And not just around Kyiv, but in other parts of the country too. The all-out battle for the capital has only intensified. Ukraine's foreign minister said a Russian missile slammed into an apartment building in southwest Kyiv early this morning, tearing through 5 floors in the high-rise. We went out today to find a huge hole punched into the corner of the building. Firefighters on the scene. Shell-shocked residents dragging belongings through broken glass and debris scattered everywhere. Yuri was just waking his wife with a birthday cake when it happened. Ненормальный человек.
I live here, and some abnormal person called Putin came into my country for no reason, invaded my home, and bombed it. The mayor has told residents of this city to seek shelter at home. Don't go out and stay away from the windows. But many people are scared, and some have come here to the deepest subway station in the city, about as close as you can get to a bomb shelter. Angelina Ogle brought her mom and her dog here for safety. We keep calm, we listen to music, we try to get like good mood. Try to stay positive. Stay positive. The overnight curfew that had been in place has now been extended from 5 p.m. today to 8 a.m. on Monday. Ukrainian security teams are checking everyone on the lookout for Russian saboteurs. When we were out on the streets today, we came across very jittery Ukrainian checkpoint guards. They had their guns drawn even on us. Everybody here is on edge. The mayor says anybody caught outside between now and Monday morning will be considered an enemy. सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिचुएशन वहाँ की इस टाइम जो है। ये एक रॉ वीडियो है जिसमें हम देखेंगे वहाँ पे बॉम्बिंग जो हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो गया है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं या भाग रहे हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पे। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Ukraine is not going down without a fight. Skirmishes lit the night sky over Kyiv as invading Russian soldiers meet stiff resistance. That fireball is a Russian plane downed by surface-to-air missiles. The sound of gunfire could be heard echoing across the capital. Blaring sirens warned of air attacks, sending people running for shelter. Ukrainian troops courageously manned strategic positions in Kyiv, blocking this major highway with tanks and their own bodies. A bridge into the city was blown up by Ukrainians to slow the Russian advance. Ukraine is claiming to have killed 1,000 Russians, and there is evidence the invaders have, at least for now, lost the momentum. This vehicle was destroyed and the bodies of Russian soldiers lay nearby. This is going to be Putin's really big mistake. Ordinary Ukrainians and foreign volunteers are joining the fight. U.S. and British intelligence say the Russians are facing resistance that they didn't think they'd face on day one. The Ukrainian government is handing out rifles for every able-bodied male to defend his country. And these volunteers gathered in an abandoned factory are being trained in how to use Molotov cocktails. You've got to give them a lot of credit. They're fighting for their way of life. They're fighting for their families. 13 Ukrainian soldiers died rather than surrender their remote island outpost to a Russian warship. In the final radio transmission, they were told, disarm and surrender, otherwise you will be bombed. Their response? A Russian tank crushed this car, trapping the elderly driver inside. Passers-by struggled to free him. Всім добрий вечір. From a secret location, Ukraine's President Zelensky posted this video rallying his people. He says he is Russia's target number 1 and his family is target number 2. जो अगला वीडियो आ रहा है इसमें हम देखेंगे रफ इमेज, लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम और जो हमला हुआ है उसकी वजह से क्या सिचुएशन हुई है और वहां पे क्या डिस्ट्रक्शन हुई है और लोग किस तरह से भाग रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स वॉच इट। ओके तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखे
कि रशिया जो है वो क्या चाहता है यूक्रेन से। एक्चुअली वो 2-3 चीजें चाहता है। बेसिकली जो है 2 चीजें हैं। एक तो वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, और दूसरा जो है रशिया नहीं चाहता है कि नेटो का फौज जो है, नेटो की आर्मी जो है उनके बॉर्डर पे आ जाए। यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बन जाता है तो उनकी जो आर्मी है नेटो की, वो यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाएगी, जो कि रशिया के साथ भी बिलोंग करता है, टच करता है। सो रशिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता है। तो इसकी वजह से वो नहीं चाहता यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बन जाए, तो है ये इसकी वजह से जंग हो रही है। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगा, पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो शेयर कीजिए इसको एंड शो सम लव। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ भी बोल सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं आप। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।